Hello everyone. Welcome to the performance management revision class in Hindi. So, एग्जाम को थोड़े ही दिन है, 14 दिन है, मोर और लेस उतना ही बाकी है. एंड कल हमने क्या किया था? So yesterday we started with our introduction. फिर हमने ACCA स्टडी हब देखा कल. ACCA स्टडी हब मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कैसे यूज करना है, वो भी मैंने आपसे शेयर किया है कल. तो प्लीज वो फॉर्मेट में यूज कीजिए. 60% of your practice questions on the ACCA study hub have to be solved, and 40% of the questions can be just gone through. राइट, गॉन थ्रू मतलब सिर्फ आंसर देख के छोड़ नहीं देना है. गॉन थ्रू मतलब उसके आंसर्स को कनेक्ट करो क्वेश्चन के साथ. रीजनिंग समझ, अपने आप को समझाओ कि हाँ रीजनिंग ओके, कौन सा कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है और उसको उस हिसाब से कनेक्ट करो. ओके, सो वो ACCA स्टडी हब मैंने आपको दिखा दिया. मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी दिखा दी कि अभी 5 दिन में आप मेरे रिविजन क्लासेस के साथ अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रिविजन कैसे शुरू करोगे. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू अ पाथ, एक डायरेक्शन दे दिया है. आप होपफुली उस पे शुरू हो भी गए हो टू वर्क फॉरवर्ड, राइट. उसके बाद हमने CBE प्लेटफॉर्म देखा, जिसपे मैंने आपको 4 मॉक पेपर्स दिखाए थे जो फुल्ली 100 मार्क्स के मॉक पेपर्स हैं. उसमें से 2 मॉक पेपर्स मैं डे आफ्टर टुमारो, परसों से शुरू करूंगी. ठीक है, एंड एक दिन में एक मॉक पेपर हम एक साथ सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम वेरिएंसेस, वी स्टार्टेड विथ वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस एक ऐसा टॉपिक है जो सारे ही सेक्शंस जो हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में है उसमें आते ही है. राइट, सो वेरिएंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन ए में या फिर सेक्शन बी में और सेक्शन सी में भी. राइट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कभी कभी स्टूडेंट्स को मिक्स वेरिएंसेस के साथ प्रॉब्लम होती है. राइट, सो इसीलिए दैट वाज द होल इंटेंशन कि मैंने वेरिएंस एक टॉपिक उठाया एंड वेरिएंस मैंने आपको एक्सप्लेन करना कल शुरू किया था. लेकिन उसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग वाले जो वेरिएंसेस है, जो है मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस बोल दे, क्वांटिटी वेरिएंस बोल दे, वो मैं आज हैंडल करूंगी. उसके बाद वी विल बी लुकिंग एट 2 सेक्शन सी क्वेश्चंस. सेक्शन सी के 20 मार्क का क्वेश्चंस है, एंड आई विल स्टार्ट विद अ मीडियम इंटेंसिटी क्वेश्चन, मतलब जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, एंड देन आई विल टेक अ लिटिल मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, सो मैं आज 2 क्वेश्चंस सेक्शन सी के 20 मार्क्स के सॉल्व करूंगी, एंड दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है. मैं दोनों क्वेश्चंस में आपको ब्रेन ड्रेनर्स भी दिखाऊंगी. ब्रेन ड्रेनर क्या होता है पहले आप समझ लीजिए. जो आपके क्वेश्चन में है लेकिन आपको दिखता नहीं है इतना एविडेंटली, बट जब आप आंसर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो ना, तो ये ब्रेन ड्रेनर्स आपके सोल्यूशन एक तो राइट आने नहीं देते क्योंकि आपने उनको निग्लेक्ट किया होगा या फिर ओवरलुक किया होगा, या फिर आपका बहुत सारा टाइम उसमें ड्रेन हो जाता है. राइट, सो आई विल बी सिलेक्टिंग इट एज ब्रेन ड्रेनर्स, एंड द अदर वन इज योर comfortable point. Right, so let's start with our mixed variances. First, we need to understand कि mixed variance होता क्या है, right? Why do we have to find out variances which are under the name of mix? So normally जब भी एक कंपनी को आप देखो, so companies, they don't, just a second, yeah, companies don't handle a single material. राइट, अगर सपोज मुझे आज एक देखो ये पेन बनाना है. ठीक है, अगर ये पेन बनाना है तो ये पेन बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं. राइट, सो जब हमको एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी है, फॉर एग्जांपल इस पेन की कॉस्टिंग निकालनी है, तो हमको उसके डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का भी इंडिविजुअल कॉस्टिंग निकालना पड़ता है. एंड ये सारे जब एक साथ कंपोज होते हैं तब जाके आपको एक मिक्स मिलता है. ओके, बिकॉज
ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो वो सिंगल रॉ मटेरियल से नहीं बनेगा, उसमें ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स वेरिएंस। कौन सा मिक्स कहाँ पे ज्यादा या कम यूज हुआ, जिसके वजह से प्रोडक्ट की, जैसे एक एग्जांपल है पेन, पेन के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ गई या फिर घट गई, राइट। सो दैट इज योर मिक्स वेरिएंस। जब हमने मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट किए थे तो हमने दो मोटे मोटे काइंड ऑफ बाइफर्केशंस किए थे। वन वाज योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड द अदर वन वाज योर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। Price variance remains the same wherever you are finding the mix and yield. But when we talk about usage variance, that is where the mix and yield comes into picture. Mix, as I said, the different composition of raw materials that are included in a single product. And yield means आपने कितना आउटपुट सॉरी इनपुट डाला है और आपको सामने कितना आउटपुट मिल रहा है, राइट। एक पेन बनाने के लिए सपोज मैंने 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो वो 100 ग्राम्स प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल 10 पेन्स बनाता है, ओके। तो एक आइडियल इनपुट टू आउटपुट का रेशियो क्या होगा? 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इज इक्वल टू 10 पेन्स, राइट। ऑब्वियसली रियल लाइफ में ऐसा होता तो है नहीं कि जितना ही आपने डाला उतना सिमिलर अमाउंट ऑफ आपको आउटपुट मिलता है। सो इवन कंपनीज डू एंटिसिपेट discrepancy in the input and output. So for example, company thought कि मे बी 2% लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक डाला है सो मे बी 9 पेन्स निकले, राइट। दैट इज व्हाट द कंपनी इज अज्यूमिंग कि आइडियली तो 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक पे 10 पेन्स निकलनी चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा मटेरियल वेस्टेज कंपनीज एंटिसिपेट करती है उसकी वजह से पॉसिबल है कि 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक से 9 पेन्स निकले, राइट। That is the expected yield from the material that is input for the process. Now, if the actual output is suppose 8 pence for the 100 grams of raw material, it shows an adverse yield variance. And if it has increased to 10 pence, it shows a favorable yield variance, right? So this is how a yield makes a difference. Yield का लॉजिक यही है कि आप जितना इनपुट देते हो उसका सेम आउटपुट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियलिस्टिक सर्कमस्टांसेस में नहीं निकलता है, राइट। तो उसको वही प्रॉपरली कैप्चर करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप एक यील्ड का वेरिएंस यूज करोगे, राइट। सो बाय दिस टाइम I think you're very clear with the logic of why a mixed variance and why an yield variance, right? Let's go see the calculations. अब यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज, राइट। सो लेट मी जस्ट एनोटेट दिस। अब इसको फाइंड आउट करते कैसे हैं, राइट। सो क्या होता है, आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स है, ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में इधर डायरेक्टली दिया गया होगा या फिर एक्चुअल क्वांटिटी सेपरेटली एंड एक्चुअल मिक्स आपको सेपरेटली दिया गया होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगी कल के रिवीजन क्लास में, ओके। सो डोंट वरी, आप जितना अभी कैप्चर कर पाते हो इसका मेथड वो कर लो ताकि कल जब मैं सॉल्व करूँ ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इसका जो भी टोटल बनता है that total is then put up here, right, in your actual quantity standard mix. And फिर ये वैल्यू जो होती है ये डिराइव होती है by putting them into proportion, right? I'll repeat it again. एग्जाम के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मिक्स दिया होगा या फिर एक्चुअल क्वांटिटी की वैल्यूज दी होगी, एक्चुअल मिक्स की वैल्यू दी होगी एंड आप उसको मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल मटेरियल्स के वैल्यूज निकाल पाओगे, राइट। उसके बाद
अब जो इसका टोटल बनता है, ये टोटल आप यहाँ ले जाओगे। सो दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2। उसके बाद जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को हम प्रोपोर्शनेट मेथड में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स प्रोपोर्शनेट वैल्यू में ये डिराइव करेंगे। उसके बाद योर स्टेप नंबर 4 इज दिस, where you are going to deduct your actual quantity into actual mix from your actual quantity into standard mix. You'll get your standard price per kilogram, which will be available in your question itself. You multiply the difference with that. So you have to do 4 into 5 and you get your 6. Right? अब कैसे पता चलेगा कि आपका स्टेप नंबर 3 तक का इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, आपका कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं है? ये जो आपका टोटल आएगा ना फोर्थ कॉलम का, अगर ये 0 बनता है तो 99% चांसेस है कि आपका स्टेप नंबर 4 तक का वैल्यूएशन पूरा सही है। ओके, ऑब्वियसली जब आप वेरिएंस पे आ जाते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, यू विल गेट योर मिक्स variance. This is how you do your material mix variance ka calculation. Clear? Let's go to the next one. Here I have written steps to calculate the material mix variance. Let's look into it. First, you need to write down the actual input of each material in a column. This is the actual quantity split in the actual mix. Then you take the actual input in total and copy it across to another column. As I said, you have to copy. That is your step number 2. This is your actual quantity split in the standard mix. Calculate the difference between the standard mix and the actual mix. This mix is in terms the physical quantity that must add up to 0. मैंने बताया ना, अगर स्टेप नंबर 4 तक का आपका अगर कैलकुलेशन सही है तो उसका जो एडिशन आएगा वो 0 ही आएगा. Multiply the difference with the standard price per kilogram and you will get your mix variance in financial terms. Clear? यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से कौन से स्टेप से शुरू करें, राइट? ये मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है. जब मैं कल इसका प्रैक्टिकल सम करूंगी तो आपको न्यूमेरिकली भी इसको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? A yield variance measures the efficiency of turning the inputs into outputs. If the yield variance is adverse, it suggests that output is lower than expected output. This could be due to labor inefficiency, higher waste, inferior material, or using a cheaper mix with a lower yield. Right? So reasons have also been put forward here for you कि yield expected से कम क्यों आ सकता है, right? So क्यों आता है? अगर लेबर ने inefficiency दिखाई है तो, या फिर ज्यादा वेस्टेज हो गया, या फिर जो मटेरियल यूज हुआ है वो लोअर क्वालिटी का हुआ है तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है, या फिर the mix is of a lower yield. How to find out? Well, there are two methods to find out the material yield. Since this is my revision class, I am only going to give you one method. Why? Because I only want you to concentrate on one way of doing it. एक दो जगह पे हाथ मार के कोई मतलब नहीं है, सबसे एक ही आंसर आता है, दूसरे वाले से कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है, तो ये आपके लिए एक सिंपलर वे ऑफ डूइंग इट, राइट? यील्ड वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे भाई? आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसमें से आप एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट को माइनस करोगे, राइट? सो अगर ये 1 है और अगर ये 2 है तो आप 1 माइनस 2 करोगे, राइट? Multiplied by standard material cost per unit of the output,
right? That would also be given. The standard cost per unit would be given, and simple, you will get your yield variance. So if you notice, finding out a yield variance with the total method, which is the method that I'm suggesting to you, is much easier. इसके बाद एक और भी मेथड आता है जिसको हम इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं, राइट? बट आई वुड रेकमेंड कि एक ही मेथड आप सीखो, एक ही मेथड से आप आगे बढ़ो. इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी रिविजन्स कर रहे हैं, थोड़े दिन में एग्जाम्स है, तो फिर दो मेथड से कंफ्यूज होने का कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है? दिस इज अ स्टेप to do your actual individual method calculation. I will go through the steps for you. Copy actual quantity standard mix from the mix variance. Calculate standard quantity standard mix for each material using the following formula. Material quantity used from material cost card into total actual output produced divided by material output quantity produced by the standard cost card. Or calculate the total standard quantity of all materials used to produce the actual output and then share this out between the different materials using standard proportion calculated from the standard cost card. Then you calculate the difference between standard quantity and standard margin and actual quantity and standard margin, multiply it with the standard price per kilogram, and you will get your yield in financial terms. So under both the circumstances, if you use the total method or individual method, you will get the answer. Your individual method that I have shown you in terms of your calculation steps is something which is a more lengthier process, and the individual method is something which I have given here in steps but I have not shown in terms of calculations. Total method is something which is easier and I have showed you how to calculate it, right? Sales mix and quantity variance. सेल्स में मिक्स वेरिएंस क्यों होता है? सी, जब भी एक कंपनी एक रियल लाइफ में वर्क कर रही है तो वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल नहीं करती, या फिर वो एक प्रोडक्ट के वेरिएशन सेल करेगी, या फिर वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करेगी. आई मीन, in this current scenario which you are, it's really difficult to just exist in the market, sustain in the market with just one product, right? That is why normally जो circumstances होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करती है. That is why there is a sales mix, right? Sales quantity variance, how much of which product to sell in the market, is something that you find out in terms of this mix or variance. So हमारा जो पुराना सेल्स वेरिएंस जो हम पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे, उसमें आपका सेल्स प्राइस एंड वॉल्यूम था, राइट? Sales price actual calculation is unchanged and calculate a separate variance for each product if you have more than one products that you are selling in the market. जब वॉल्यूम की बात आती है तो वो प्राइस इतना सिंपल नहीं रहता है, उसमें दो सेग्रीगेशंस है, एक मिक्स है और एक क्वांटिटी है. Mix is measures the impact on the profit of a change in the sales mix of the products sold. Quantity is the measures in the impact on profit of a different total quantity of products actually sold to the budgeted. Right? So this is how the volume would variate. इसके भी हमने सम्स करने हैं. अगर आपको मटेरियल मिक्स समझ में आया है तो सेल्स मिक्स एग्जैक्टली वही लॉजिक पे चलता है, राइट? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स क्वेश्चन में दिया गया होगा, हमको वहां से कॉपी पेस्ट करना है. उसको टोटल कीजिए और उसको यहाँ कॉपी कीजिए. फिर जब हमको स्टैंडर्ड निकालना है तो हम प्रोपोर्शनेट मेथड से स्टैंडर्ड निकाल देंगे. दिस इज अवर स्टेप नंबर 3. Fourth is your difference between AQSM and SQSM. And if you want to find out if your answer is correct or not, the total of your fourth column or fourth step has to be 0. Standard margin दिया होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में 4 into 5, कॉलम 4 into कॉलम 5 करेंगे
तो आपको कॉलम 6 का आंसर मिल जाएगा, राइट। एक ही बार लॉजिक समझना है, मटेरियल मिक्स या सेल्स मिक्स एक ही बार समझना है। अगर ये एक बार आप समझ गए तो ये लॉजिक आप इसको सेल्स में हो या मटेरियल में हो वहीं दोनों जगह पे यूज कर सकते हो, राइट। सो कंफ्यूजन लेस रहता है इसमें। स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा टोटल निकालना है और कहाँ पे प्रोपोर्शनेट डालना है। सो मैं वही आपके लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू अगेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम कल सॉल्व करेंगे। Okay, so this is how you take out your sales mix variance. Obviously you got a mix of three products here: product 1, product 2 and product 3. Actual quantity, actual mix either एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको फिगर आउट करके मल्टीप्लाई करना है, उसका एक टोटल निकालना है। वो ही टोटल आप कॉलम नंबर 3 इसमें थर्ड कॉलम में डाल दोगे एंड उससे आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करोगे यूनिट ए बी सी का, which is your standard amount of units that you expected to sell. डिफरेंस फाइंड आउट करोगे एक्चुअल में से स्टैंडर्ड निकाल के। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर स्टेप नंबर 4 तक करेक्ट है कि नहीं, तो फिगर आउट करो कि आपका टोटल 0 होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड मार्जिन आ गया, विच वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड मार्जिन वुड बी योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ओवरहेड होगा, ठीक है। And then you multiply step number 4 with step number 5 or column number 4 with column number 5, you will get your variance in your column number 6 individually मिलेगा, उसको ऐड करके figure out if it's a favorable or an adverse variable. मैंने आपको कल के क्लास में बताया था फेवरेबल किसको कहते हैं एंड एडवर्स किसको कहते हैं। प्लस एंड माइनस साइन से मत जाना, लॉजिक समझना कि इनफ्लो ऑफ कैश है या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश है कंपनी के लिए, राइट। I've written down the steps here also. So write down the actual sales quantity for each product in a column, and this is the actual total sales quantity split in the actual mix. Take the actual sales quantity in total and copy it across another column. Then work it back in the standard proportion. This is the actual total sales quantity split in the standard mix. So you're working it back. Calculate the difference between the standard mix and the actual mix. This is the mix variance in terms of physical quantity must add up to 0 in total. As I said, अगर आपको चेक करना है कि स्टेप नंबर 4 तक आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप यही चेक कर सकते हो। Multiply the difference with the standard margin, and this gives the sales mix variance in financial terms. Right. Sales quantity. हमने जो अभी तक किया that was the mix. Now in terms of the quantity. Again, you have three products. AQSM, BQSM. AQSM क्या है पता है? ये आपका कॉलम नंबर 3। AQSM का वैल्यू लेके ना आपको डाल देना है। बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स का वैल्यू कभी कभी डायरेक्टली दिया होता है क्वेश्चन में, नहीं तो इंडिविजुअली भी दिया होगा कि दिस वाज आवर बजटेड सेल्स एंड दिस वाज द क्वांटिटी दैट वी एक्सपेक्टेड टू सेल एंड एट दिस मार्जिन, राइट। सो वो आपको वहां से मिल जाएगा। You do column 2 minus column 3 and individually multiply that with the standard margin, you'll get your variances. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है yield वेरिएंस से। अगर नोटिस करोगे तो मटेरियल मिक्स एंड स्टैंडर्ड मिक्स, सॉरी, मटेरियल मिक्स एंड सेल्स मिक्स का लॉजिक बहुत सिमिलर है, लेकिन yield एंड क्वांटिटी का लॉजिक काफी डिफरेंट है। They go in the same line, but here in quantity, we need to do it for individual products, right? I have given the steps in this, which is your method. Actual quantity into standard mix, you have to pick up from the mix variance, which we have just seen. Copy the budgeted sales unit under the budgeted sales quantity standard mix, calculate the difference, and then you need to multiply that with the standard margin and give the sales quantity variance in financial terms. So जो आप पहले फाइंड आउट करते हो ना, वो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उसको जब आप मार्जिन से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके आपको एक
फाइनेंशियल वैल्यू या न्यूमेरिकल डॉलर वैल्यू मिल जाएगा। The difference between actual sales volume and budgeted sales volume at the weighted average profit per year. Sales quantity variance is total sales quantity minus budgeted sales quantity into standard weighted average margin. A standard weighted average margin per unit is something which is not directly given in the question. So that's why even though the quantity variance calculation that I just showed you was little more having more steps than this one, it's still fine. I've gone through and I have I've liked that one more because वो calculation wise easy हो जाता है, right? ये वाले में जब आपको वेटेज एवरेज मार्जिन पर यूनिट फाइंड आउट करना पड़ता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, यू गेट कंफ्यूज एज अ स्टूडेंट। सो मैं ये वाला ज्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं क्वांटिटी वेरिएंस के लिए जो पहले वाला जो मैंने आपको मेथड दिखाया था, आई स्टिक टू दैट मेथड। ओके, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। नाउ जो हमने अभी वेरिएंसेस पढ़े, सेल्स वेरिएंस बोल दो या फिर मिक्स वेरिएंस या मटेरियल वेरिएंस एक्सेट्रा, वो सारे वेरिएंसेस को बोलते हैं ट्रेडिशनल वेरिएंसेस, राइट? एंड प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस आर द वेरिएंसेस व्हिच वुड गिव अ मोर रियलिस्टिक रिजल्ट, राइट? अब क्या होता है जब भी वेरिएंस होता है, राइट, wherever there is a discrepancy in the budgeted and the actual, it's not always a fault of the person who is making the budget, right? It's not possible. Kabhi kabhi there are unforeseen circumstances that come into affecting, right? And that is where companies end up meeting up to their budgets. Planning variance and operational variance are also called as modern variances because they give a much more broader approach to the variance panel. प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस दोनों में ही फ्लेक्स्ड बजट का यूज होता है। फ्लेक्स बजट इज अ cusp between fixed and flexible, where certain parts of the budget are fixed and few parts are flexible. Planning variance compares the revised budget and the original budget, often deemed to be uncontrollable, and management should not be accountable for it. When we talk about operational variance, compares actual result with the revised, deemed controllable, and management is held responsible for the operational variances, right? So planning एक ऐसा वेरिएंस है जो ऑब्वियसली प्री प्लान करके अच्छे से एक वैल्यू आपको देता है, राइट? फिर भी अगर उसके अपोजिट कुछ हो जाता है तो इट इज अनकंट्रोलेबल। दैट इज व्हाई एनी ब्लेम or the management should not be accountable for any planning variance discrepancies. Operational is something which happens in a day-to-day life, right? Company is coming aware of it, more near effect to what is happening. And that is why it is deemed as controllable and management should be responsible for taking that accountability, right? How to calculate them? The sales volume variance can be subdivided into planning and operational variance, quantity sales, actual sales quantity into standard margin, minus revised budgeted sales into standard margin. The difference between them is called market share variance, also known as operational variance. Okay. Similarly, revised budget sales into standard margin minus original budgeted sales into standard margin gives you market size variance, also known as planning variance. जो ये टर्म है ना रिवाइज्ड, ये टर्म आता है रिलेटिवली फ्लेक्स्ड बजट के साथ, राइट? दैट मीन्स जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है कंपनी अपने बजट को भी ऑल्टर करता है, मॉडिफाई करता है, इसीलिए उसको हम रिवाइज्ड बजट बोलते हैं, राइट? प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस फॉर मटेरियल, देखिए ये जो है ना आपका जनरल वेरिएंस है सेल्स के लिए। मटेरियल के लिए क्या होता है? Planning and operational variance can be calculated for material in the same way as above, like we did for sales.
and for labor would be calculated same way as material. So in short, if you are finding out planning and operational variance for material, labor or sales, the formula runs like this, right? Revising the budget again. When applying planning and operational principles to cost variance, care must be taken over flexing the budget. The accepted approach for use in the exam is to flex both the original and revised budget to actual production level. So your actual level minus your flexed budget gives you your operating variance. And your flexed budget minus your original budget gives you your planning variance, right? Operating variance again is something which is controllable and the management is responsible for it. Planning variance is something which is not in their hand and they should not be accountable for it. Right? If in exam you are pushed, then calculate operating variance, but give a single total planning variance for each category. Right. This is how the theory part of variances go. Right. As I said, जब कल हम हमारा क्वेश्चन करेंगे वेरिएंस का तो ये ही जो लॉजिक है थियोरी का आप उठा के उसमें यूटिलाइज कर सकते हो. Now let's go to our first section C question. Just give me 1 minute. Let me set up the screen for that. Right. Brick by brick. As I said, हम एक मीडियम इंटेंसिटी क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अ लिटिल मोर ट्रिकियर क्वेश्चन. ठीक है. ये क्वेश्चन में जब आप पहली बार एक क्वेश्चन पढ़ते हो, स्पेशली सेक्शन सी का या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है तो सारे ही क्वेश्चंस, मैंने कल भी बताया था आपको एकदम थॉरली क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लेना है. दैट डज नॉट मीन कि 20 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं 10 मार्क क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है. आपको इनफ टाइम लेना है. डज नॉट मीन कि आपको आधा टाइम पढ़ने में निकालना है, ऐसा नहीं करना है. अगर आप एक 100% टाइम की बात कर रहे हो तो फर्स्ट 10% ऑफ योर टाइम should be utilized in understanding the question and the rest 90% of the time should be utilized in answering the question. Okay. So when I say answering the question includes your formation, also includes the strategy. ओके. सो वो 90% में आपको काफी चीजें करनी होती है. लेकिन जब भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का स्पेसिफिकली 20 मार्क का क्वेश्चन जिसको अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा अराउंड 35 मिनट्स. राइट. आपको कितना यूज करने बताया था मैंने? 30 मिनट्स. राइट. सो वो 30 मिनट्स में आप क्या करोगे? पहले पहले तो अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है, रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो थोड़ा रीडिंग फास्ट कर लो. ओके. दैट डज नॉट मीन कि एक बार नॉवल की जैसा पढ़ जाना है, ऐसा नहीं है. लेकिन यू नो लुक फॉर दोज वर्ड्स, लुक फॉर दोज की नंबर्स दैट यू रिक्वायर फॉर राइटिंग योर आंसर. यहाँ पे अगर मैं एक ग्लैंस में ही अगर ये क्वेश्चन देखूं तो मुझे काफी नंबर्स दिख रहे हैं. राइट.
ना इसको अप्रोच करने के दो वे होते हैं। एक कोई भी 20 मार्क का क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो दो तरीके हैं। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर तरीका नहीं सिलेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आपकी रीडिंग पैटर्न क्या है, राइट? So the two ways are, first, you go through the whole question thoroughly, look for your numbers, look for the important things that you want to, maybe mark on it or something, and then go to what is required in the question. या फिर जैसे मैं अपने एग्जाम्स में करती थी, मैं पहले रिक्वायरमेंट देख लेती थी, राइट? कि भाई क्या पूछा है एग्जाम में, कितना थियोरी है, कितना कैलकुलेटिव है, और जो भी कंफर्टेबल लगता था उससे शुरू करती थी मैं, राइट? सो आप भी वो यूज कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको क्या फॉर्मेट यूज करना है। एज फार एज आप जो कर रहे हो उससे बस स्कोर हो जाए हमको, दैट्स ऑल दैट वी वांट, राइट? मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ूंगी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, सो आई एम जस्ट गोना स्टिक टू दैट हैबिट. Brick by Brick is a building business that provides a range of business services to the public. Recently, they have been asked to quote for garage conversions and extension to properties. That means ये company के पास दो products है, एक GC और एक EX. They have found out that they are winning fewer GC contracts than expected. मतलब जो पहला product है उनका GC, वो काफी अच्छे से sell कर रहे हैं वो लोग market में. BBB has a policy to price all jobs at budgeted cost plus 50%. कंपनी 50% प्रॉफिट पे काम करता है based on their cost. Overheads are currently absorbed on a labor hour basis. BBB thinks that a switch to activity based costing to overhead absorbed to absorb overheads would reduce the cost associated to GC and hence make them more competitive. सो कंपनी क्या बोल रही है यहाँ पे? एक तो कि 50% प्रॉफिट लगाती है कॉस्ट पे, दूसरा ओवरहेड्स फिलहाल लेबर आवर्स पे सेग्रीगेट होते हैं, राइट? दे वांट टू स्विच टू एबीसी टू maybe feel that GCC would reduce on its cost and make them more competitive in the market, right? अगर आप नोटिस करो फर्स्ट पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन किया था कि जीसीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ज्यादा मिल रहे हैं, तो अगर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव करना है तो कंपनी क्या करेगी, वो प्राइस उसका डाउन कर लेगी। और अभी जो प्राइस वो फाइंड आउट कर रही है वो नॉर्मल ओवरहेड कॉस्टिंग से फाइंड आउट कर रही है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड है ये। अब उसको एबीसी में शिफ्ट होना है। देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड हियर। ओवरहेड कैटेगरी of different things that are taking up individual times. Annual overheads for supervisors is 90,000, planners 70,000, property related $240,000. Activity drivers site visit based on the supervisor is 500. Planner 70,000 based on planning documents 200. Property related based on labors of 40,000. A typical GC costs 3,500 in material and takes 300 labor hours to complete. So अगर हम कॉस्टिंग देखने जाए तो क्या कॉस्ट निकल रहा है? मटेरियल का कॉस्ट है 3,500, लेबर ले रहा है 300 labor hours. A GC requires only one site visit by a supervisor and needs only one planning document to be raised. The typical EX costs $8,000 in material and takes 500 hours to complete. An EX6 requires 6 site visits and 5 planning documents. In all cases, labor is paid $15 per hour. So अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्या लग रहा है? ये पैराग्राफ, isn't it? क्या मिल रहा है मुझे? डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही है। क्या वैल्यूज मिल रही है? मटीरियल मिल रहा है, लेबर आवर्स मिल रहा है, पर लेबर आवर का कॉस्ट भी मिल रहा है, राइट? And that too for both the products, which is my GC and EX. अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम प्रेशर में प्राइमा फेसिली देखते हैं ना, तो आपको कंफर्टेबल और ब्रेन ड्रेनर्स तब नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ यहाँ पे कंफर्टेबल ये है आपके लिए।
Comfortable is something which you see and gives you a happy hormone कि हाँ चलो इसके साथ मैं कुछ तो मार्क्स ले लूंगा या ले लूंगी. And something that you tend to miss is this, which is a brain drainer. क्यों? क्योंकि ये वाले पैराग्राफ में जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ पैराग्राफ है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देख के आगे बढ़ते हैं. राइट, चलो अब इसको पहले सॉल्व करें. क्या पूछा है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? कैलकुलेट द कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस of GC and EX using labor hours to absorb the overheads. Second, calculate the cost and the quoted price of GC and QX using ABC to absorb the overheads. Right. Third question, assuming that the cost of GC falls by nearly 7% and the price of an EX rises by 2%, about 2% at a result of a change to ABC, suggest possible pricing strategies for the two products that BBB sells and suggest two reasons other than high price for the current poor sales of GC. One BBB manager has suggested that only marginal cost could be included in the budget cost calculation, as this would avoid the need for arbitrary overhead allocation to products. Briefly discuss this point of view and comment on the implication for the amount of markup that would be applied to budget cost when producing quotes for jobs. Right, so this is how you total up your 20 marks. फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे कंफर्टेबल क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज टू कैलकुलेट द कोटेड प्राइस ऑफ जीसी एंड ईएक्स. वैल्यू मोस्टली यहाँ पे है, और दूसरा क्या इंफॉर्मेशन है, लेबर आवर्स टू एब्सॉर्ब विद द ओवरहेड्स. टोटल ओवरहेड कॉस्ट दिया है, लेबर आवर्स दिया है, तो लेबर आवर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. राइट, नंबर ऑफ लेबर्स भी दिया है लेबर आवर्स को, सो यू कैन फाइंड आउट द ओवरहेड कॉस्ट. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. ये है हमारा ए. राइट, सो हमारे प्रोडक्ट्स हैं GC EX. जो चीज़ें मुझे मालूम है मैं लिखती जाऊंगी. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. ओवरहेड का वैल्यू भी निकाल देते हैं यहाँ पे. ओवरहेड कैसे निकाला ये लोग ने? टोटल ओवरहेड कॉस्ट विच इज 4 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स. सो कितना आता है? इट वुड बी अराउंड $10 पर आवर. मटेरियल की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है, 3500 फॉर GC, 8000 फॉर EX. So I'm just going to put those values here. लेबर हमको कैलकुलेट करना है. 300 लेबर आवर्स एट $15, 500 लेबर आवर्स एट $15. मैंने आपको कल बताया था कि कैलकुलेटर मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, और मैं आपको भी 100% यही रेकमेंड करूंगी कि एक्सेल पे या स्प्रेडशीट पे जो भी आपका रिस्पॉन्स एरिया है उस पे जितना भी कैलकुलेशन चाहिए वहीं के वहीं करो. कैलकुलेटर यूज ही मत करो. ओके, अनलेस आप वर्ड फॉर्मेट में काम कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही अनलाइकली है. मुझे नहीं लगता किसी भी पेपर में आपको वर्ड या वर्ड प्रोसेसर देंगे एक्सेल के कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, सो आई वुड स्ट्रांगली हाईली रिकमेंड एक्सेल या स्प्रेडशीट, आप जो बोलो वो, उसके बेसिक कैलकुलेशन से बहुत ही यूज टू हो जाओ. हमको कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं है. इन्विजिलेटर दे या ना दे, हमको उस पे जाना ही नहीं है. ओके, लेबर के लिए क्या करना है? 300 laborers per $15. So I'm going to put is equal to 300 multiplied by my 15, 4,500. Here I'm going to say 500 into 15, 7,500. Overheads, they have mentioned that it would be according to the labor hours.
And we have found out the overhead per hour also, which is $10. So I'm just going to say is equal to 300 multiplied by $10 per hour and is equal to 500 multiplied by $10 per hour. निकल गया? ये तो हुआ मेरा कॉस्ट. अब क्या करेंगे? सारे टोटल करते हैं कॉस्ट को. फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, select the first cell from where you want to take the number figure, drag it to the last cell, or use your shift key, or I think shift is the key in that normal keyboard. So shift and then drag yourself down, right? 11,000. I want to copy the same formula from column D, from the cell D28 to my E28. So मैं क्या करूंगी? जो फॉर्मूला मुझे कॉपी करना है, अब मैं अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैंने फॉर्मूला डाला है. अगर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज डाली होती और मैं उसको कॉपी करती तो बाजू में सेम वैल्यू आती. मैं फॉर्मूला कॉपी कर रही हूँ जो सेल रेफरेंसेस के बेसिस पे है, इसीलिए वो फॉर्मूला ही कॉपी करेगा. सो आप देखो यहाँ पे एक पतला सा क्रॉस आ जाता है, राइट? You need to pick it up and drag it, right? This is how you do it. फिर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वापस चलो. कोटेड प्राइस, कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस. कोटेड प्राइस कैसे मिलेगा? Look at my brain drainer. BBB has a policy to price all jobs at budgeted total cost plus $50, right? 50%. So ये 50% is a price that you will charge over your cost. Quoted price कैसे करोगे? Is equal to, open your bracket, 11,000 multiplied by 150, क्योंकि 50% है, divide by 100. Quoted price आ गया. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज की है with two absolute numbers and one cell referencing. So मैं इसको easily drag करूं और मेरा दूसरा आंसर भी आ जाएगा. Again, I am telling you, अगर आप एक्सेल के फॉर्मूलाज यूज करोगे, एक्सेल पे यूज कर रहे हो, एक्सेल पे ही अपना सारा काम फिनिश करोगे, तो ही आप ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर टाइम पे फिनिश करोगे. अगर वही कैलकुलेटर उठाया या फिर वही रिस्पॉन्स एरिया का जो कैलकुलेटर का ऑप्शन है वो यूज करके आप करने बैठोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. एक्सेल पे ये काम फास्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 2 times फास्टर, राइट? सो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताती जा रही हूँ आपको कैसे यूज करनी है, सो यू डोंट गेट एन इश्यू. सेकेंड क्या पूछ रही है? कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द कोटेड प्राइस ऑफ अ जीसी of a GC and of an EX using labor hours to absorb, वो हम लोग ने अभी कर दिया. Calculate the cost and the quoted price of a GC and of an EX using ABC to absorb the overheads. Right? चलिए, अब हम सेम चीज करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ABC. ABC यूज करने के लिए क्या करना होता है? ABC यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे देखने हैं मेरे एक्टिविटीज या कॉस्ट ड्राइवर्स और उसके साथ की कॉस्ट, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो मैं अपना पर प्रोडक्ट कॉस्ट नॉर्मलाइज करूंगी विद द एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर्स. हाउ डू वी डू इट? एक सुपरवाइजर का कॉस्ट कितना लगता है? कॉस्ट पर ड्राइवर कितना है? 90,000 डिवाइड बाई 500. सेम प्लानर्स का 70,000 डिवाइड बाई 250. सेम प्रॉपर्टी रिलेटेड का 2,40,000 डिवाइड बाय 40,000. This will give me cost per driver.
फिर इफ यू सी दिस लास्ट पैराग्राफ, जीसी का इंडिविजुअल कॉस्ट दिया हुआ है एंड ईएक्स का दिया हुआ है। जीसी में सबसे सिंपल है लेबर 300, राइट। सो मैं वो 300 लेबर्स को अपने नंबर ऑफ लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। सो 300 into whatever the difference comes or whatever the division value comes. सेम फॉर 500। इनको एक सुपरवाइजर और एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वन ऑफ ईच ऑफ दीज कॉस्ट ड्राइवर्स। ईएक्स के लिए 6 site visits and 5 planning documents. So 6 into the value of the cost driver for supervisor, 5 into the value of documents for the EX product, right? In terms of planning documents. You add them up together, you put your cost plus 50% and you get your answer. दो स्टेप्स एक्स्ट्रा है यहाँ पे, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, एक बार क्वेश्चन समझ लो। मैंने इसीलिए बोला 10% ऑफ योर इनिशियल टाइम to see any question, especially of section C, should be on reading the question, understanding the question. क्योंकि तो ही आप फास्ट कर पाओगे, राइट। अब वो आप पे है, आप कब रीड कर रहे हो। चलो, let's do this. Let's segregate these values into cost, number of drivers, and cost per driver. So पहला है सुपरवाइजर, उसके बाद था, एक्चुअली मैं इसको ही क्यों ना नीचे ले जाऊं, मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करके ना, I will just put it here and little extend this, right? उसके बाद I will put my activity numbers also down here just next to it, right? So ये मेरे number of drivers आ गए, and then I have to find the cost per driver, right? So मैं पहली बार में फॉर्मूला यूज करूंगी गाइस एंड गर्ल्स, फॉर्मूलाज दे रही हूँ, फॉर्मूलाज अच्छे से समझो एंड यूटिलाइज करो। द फर्स्ट फॉर्मूला इज 90,000 डिवाइड बाय 500। मेरा ऑलरेडी फॉर्मूला है, मैं डाल दूंगी। सेम फॉर्मूला मुझे नीचे कॉपी करना है, तो मैं वो छोटे क्रॉस का वेट करूंगी एंड आई विल पुट इट डाउन। कभी कभी आप जब सीवी प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देते हैं लेकिन सेंटर पे जाके ना, तो उनका माउस ठीक से काम नहीं करता, या फिर कभी थोड़ा ट्रैक पैड में इशू है, अगर वैसे कुछ होता है तो सिर्फ कीबोर्ड से भी आप इसको यूज कर सकते हो। जो भी आपकी सिलेक्शन है उसको सिलेक्टेड रखो and then you have to do control C, drag it to wherever you want it and control V, right? Your formula will be copied. This is how you find out your cost per driver. Now we will put the cost per driver on the different categories of products, right? So now we have got products, and then we have supervisor, planner, and property. दो products कौन से अपने, GC, EX. Supervisor, how many GC requires? One. And planner also, he requires one. And the labor that they require is 300. So I'm going to put all of them, which is equal to 180 into 1 equal to 280 into 1 and equal to 300 into my 6. Right? जितना हो सके उतना सेल रेफरेंसिंग और फॉर्मूला यूज करो, अपना टाइम स्पेंड इसमें करो, और ये मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप इम्प्रोवाइज होते ही जाओगे 100%। EX, नेक्स्ट क्वेश्चन। EX में कितना था, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट। EX takes 500 labor hours, 6 site visits and 5 planning documents. So we will do the same. Is equal to 180 into 6
is equal to 280 into 5 is equal to 500 labors into 6. सबके इंडिविजुअल कॉस्ट आ गए ओवरहेड का, मटेरियल का तो पहले से ही था, लेबर का तो पहले से ही था, सिर्फ क्या चेंज हुआ, ओवरहेड कॉस्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये ही वैल्यूज यहां से उठा के नीचे लेके आ रही हूँ। ये ट्रिक्स क्यों दिखा रही हूँ पता है, ताकि जब आप अपना क्वेश्चन करें तो ये सब में टाइम वेस्ट ना करें। अपना ओवरहेड वैल्यू डाल दो, राइट, पहले यही टोटल बना देते ये लोग का, इज इक्वल टू द सम ऑफ सप्लाइंग प्लस प्लानिंग प्लस प्रोडक्शन, दैट कम्स टू 2260, and the same formula I'm going to say shift C, sorry, I'm going to take the same formula and going to drag into the next one. Here I'm going to use the same formula, same overhead values which I have calculated earlier, 2260. Obviously मैं सेल रेफरेंसिंग से सीधा ही उठा लूं, क्यों कॉपी करूं, कॉपी करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, right? And then we need to put our formula for the cost, which is equal to sum of the values that I want to put. Once I have done one formula, I just need to drag it to the next. सेम अगर मुझे उसका कोटेड प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करके फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 150 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू, oh, is equal to 10260 multiplied by 150 and divided by 100, right? Same, I'm going to drag the formula, but here because I used absolute value, if you notice मैंने यहाँ पे absolute value use करी थी, that's why the formula has not come here in the next cell. Let me put the formula and show you. Bracket open करके cost लेके multiplied by 150, close your bracket, divided by 100, it comes to 15390. Let me go back to it, select the cell, drag it to the next cell, and you will get the quoted price for EX, which is 31470. So here now what you are selling it at, if you notice आपका quoted price GC का था 16500, जो अगर ABC यूज करो तो would come down to 15390, एंड आपका प्राइस EX का था 30750, जो अगर आप ABC यूज करो तो comes to 31470, right? So under both circumstances what has happened is your the product which you're selling more had a lesser cost, but you were charging more to it, and that's why the profit was also, the price of that was also higher, and vice versa happened to EX. Let's see what the question is asking. Assuming that the cost of a GC falls by nearly 7% and the price of EX rises by about 2% as a result of the change to ABC, suggest the possible pricing strategies for the two products that BBB sells, and suggest two reasons other than price for the current poor sale of GGC, right? So अभी apparently उनके पास sales कम है, तो क्या reason हो सकता है? थियोरी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है। सेंसिबली अच्छे से छोटे छोटे 6 पॉइंट्स तो मिलते नहीं है, लेकिन 3 4 5 पॉइंट्स अच्छे से मिल जाए, यू कैन जस्ट पुट इट। मैं ये आंसर पॉइंटर फॉर्मेट में लिख रही हूँ, आप पॉइंटर फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, आप इसको प्रॉपर पैराग्राफ में ही लिखोगे, ओके? लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू राइट इट, एंड यू विल बी राइटिंग इट योरसेल्फ इन अ प्रॉपर पैरा फॉर्मेट, राइट? सो क्या लिखोगे? फर्स्ट तो यू विल से दैट द करंट प्राइस is 50% on markup, sorry, on cost,
What else? You can say if GC price falls by 7%, it becomes more competitive, isn't it? Right? और ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाएगा. What else can we write? The reduction in the price of GC should not compromise the quality of the product. क्योंकि अगर अपन एबीसी कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो वैसे भी अगर देखो तो उसकी कॉस्ट कम है, और का कॉस्ट कम करने के चक्कर में यू कैन नॉट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर मेंशनिंग हियर. व्हाट एल्स कैन वी राइट? बीबीबी could penetrate the market by pricing some jobs cheap to get a foothold. Foothold means getting a grip. Okay. Then you can say the reduction or increase in price will affect the reliability and reputation of BBB. और क्या लिखेंगे? We can say that the product demand is less for EX, right? So anyways product अगर EX less demand में है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? और उसका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इट वुड बी लेस कॉम्पिटिटिव. The product demand for EX is anyways less, and the price rise can lead to it being less attractive. Right? So as I said, we have to think of good 6 points. या फिर अगर 6 individual points नहीं मिले, then we have to look for 3 or 4 points, but the points have to be decent enough. Right? पॉइंटर्स में लिखा है, आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है इसको प्रॉपर सेंटेंस में फॉर्म करके. One BBB manager has suggested that only marginal cost should be included in the budget cost calculation, and this would avoid the need for arbitrary overhead allocation of products. Briefly discuss this point of view and comment on the implication for the amount of markup that would be applied to budget when producing quotes for the jobs. Right? So first of all, the question is, do we agree to this manager? And we would say yes, because marginal cost में क्या होता है? We can stick to a point where we don't get confused between what is overheads and how to allocate it. Right? So let's pick up that point and say that the overheads doesn't change for many jobs. ये एक है ना 4 marks का क्वेश्चन है, राइट? तो 4 marks के लिए सेंसिबली अच्छे से 4 points या 2 decent point दोगे फिर भी चलेगा. We can say marginal cost is more understandable and easy for managers to apply, but it's too simple in the competitive market, right? And lastly, we can say that in the long run,
business have to cover all costs, including fixed overhead also. Right? So 4 marks का question है, 2 decent point with a good closure would end the question there. 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सॉरी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. एट एन एवरेज अगर आप 1.8 के हिसाब से जाओ तो 36 मिनट्स मिलती है. मैं बोलती हूँ इसको 30 मिनट्स में फिनिश करो, 6 मिनट्स छोड़ो अपने लिए, ताकि कहीं कुछ इम्प्रोवाइजेशन डालना है तो बाद में डाल सको. That's why I always say to stick to that 1.5 minutes. Don't go to 1.8 minutes, right? Always come back to your question. Right. That brings us to the end of this first medium intensity question, which is called brick by brick. अगर आप नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रेन ट्रेनर और कंफर्ट जोन दोनों दिखाया है. ये आप जैसे जैसे खुद करते जाओगे ना, आप खुद आइडेंटिफाई करते जाओगे कि अरे यार ये मुझे पहले देखना चाहिए था. That is your brain trainer. Right? So always identify the brain trainers and comfort levels and use them mindfully, use them consciously to make sure that you are scoring maximum out of your 20 marks. Right? With that note, I'm going to take a break of 10 minutes and I will see you on the other side after 10 minutes.
Hi all, hopefully you can hear me. Hi all. चलो गुड राइट। अब मैंने बोला था कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको हैंडल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने वर्ड फॉर्मेट में रखा है और मैं साइमल्टेनियसली इसको एक्सेल शीट पे सॉल्व करूंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। ये भी एक 20 मार्क का क्वेश्चन है। सेक्शन सी के जो सारे क्वेश्चंस होंगे ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो सारे ही 20 मार्क्स के होंगे। तो जो मैंने पिकअप किए हैं वो सारे वही टिपिकल लेंथ के क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चंस नेम इज स्निफ। Sniff Limited manufactures and sells its standard perfume by blending a secret formula of aromatic oils and diluted alcohol. The oils are produced by another company following a lengthy process and are very expensive. The standard perfume is highly branded and successfully sold at a price of $39.98 for 100 ml of bottle. So ये कंपनी करता क्या है? बनाता है परफ्यूम्स, हाई एंड परफ्यूम्स बनाता है। 100 ml की बॉटल $39.98 पे बिकती है। Sniff is considering processing some of the perfume further by adding a hormone to appeal to members of opposite sex. The hormone to be added will be different for the male and the female perfumes. Adding hormone to perfume is not universally accepted as a good idea, as some people have health concerns. On the other hand, market research carried out suggests that a premium could be charged for a perfume that can promise the attraction of a suitor. The market research has cost of 3000. So ये वाले जो पैराग्राफ है उसमें सबको काफी इन्फो मिल रहा है। एक क्या है कि जो ये प्रोडक्ट है, जो ये हॉर्मोन्स इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट है, जो कंपनी फर्दर प्रोसेसिंग के करना चाहती है। सो बेसिकली कंपनी एक परफ्यूम बनाती है जो वो मार्केट में सेल करती है 100 ml का बॉटल फॉर $39.98। उसको अगर फर्दर प्रोसेस करे और उसमें हॉर्मोन्स डाले, तो मेल और फीमेल के अलग हॉर्मोन्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, ये ऑपोजिट सेक्स को आपके तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक हार्मोन डाल रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच वुड नॉट बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली बिकॉज कुछ लोगों को इससे हेल्थ कंसर्न्स होती है। बट मार्केट रिसर्च कहता है कि अगर ये परफ्यूम चल गया, देन it would be a very good premium that the company can charge on it, right? ये जो मार्केट रिसर्च का कॉस्ट है would be around $3000, and that obviously would happen once the product is launched into the market and वो product available है जिस पे लोग सर्वे कर सकेंगे। The data has been prepared for the cost and revenue expected for the following month, assuming that a party of the company's output will be further processed by adding the hormones. So, obviously, उसके बाद की जो procedure है उस पे बात कर रहे हैं हम। The output selected for further processing is 1000 liters, about a tenth of the company's normal output. So, अगर company 1000 liters अगर हार्मोन इन्फ्यूज्ड परफ्यूम बना रही है, तो वो टोटल कंपनी के आउटपुट का 1/10 पोर्शन है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 1000 liters 99% is made up of diluted alcohol which cost $20 per liter. The rest is a blend of aromatic oils costing $18,000 per liter. सो ये जो 1000 लीटर्स बन रहा है उसमें से 99% जो इंग्रेडिएंट है
वो है अल्कोहल, जिसका कॉस्ट पड़ रहा है $20 पर लीटर। जो 1% ये 1000 लीटर्स में से है, वो है एरोमेटिक ऑयल, जो पड़ रहा है कंपनी को 18,000 पर लीटर। Labor required to produce this is 2000 labor hours, and the cost of labor is $15 per hour. Further information of the output selected for further processing, मतलब जो 1000 लीटर है उसमें से 20% या 200 लीटर is used for the male version, and 80% या 800 liters will be used to make the female version of the perfume. जो मेल हॉर्मोन्स की कॉस्टिंग है वो है $7750 पर लीटर, एंड जो फीमेल हॉर्मोन्स की कॉस्टिंग है वो है $12,000 per liter. You will require, the company will require 2 liters of male hormones and 8 liters of female hormones. In both cases, adding the hormone adds to the overall volume of the product as there is no resulting processing loss. Sniff Limited has sufficient existing machinery to carry out the testing process. The new process will be supervised by one of the most experienced supervisor currently employed by Sniff Limited. Their current annual salary is $35,000, and it is expected that they will spend 10% of their time working on the hormone adding process during the test month, and this will be split evenly between the male and the female version of the product, right? So यहाँ पे एक supervisor है जो like he or she has been working with the company and paid an annual salary of 35,000. वो अपने टोटल टाइम में से 10% ऑफ द टाइम ये नए प्रोडक्ट के पीछे लगाएंगे. Extra labors will be required for further process, and the perfume will be taking how many? 500 hours for the male version, 700 hours for the female version. Labor is currently fully employed, making the standard product, and new labor with the required skill will not be available at a short notice. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ही हमारे पास लेबर्स है उनमें से ही हमको लेबर उठा के हमारे नए प्रोडक्ट में डालना है. मतलब क्या हुआ? लॉस्ट कंट्रीब्यूशन. Sniff Limited allocates fixed overhead at the rate of $25 per labor hour to all products for the purpose of reporting profit. That means it is something which will be going through all the products that they make. The next important price is the next important thing is the sales price. Male version will be sold at $75 per 100 ml, and female version will be sold at $59.5 per 100 ml. What do you need to do here? So this question is divided into two points, 5 marks and 15 marks. Outline the financial and other factors that Sniff Limited should consider when making a further processing decision. And this looks like a theory question to me of 5 marks. The second question is evaluate. कल मैंने बताए थे कोई terms अगर याद हो तो narrative and numerical questions के. So यहाँ पे उसमें से एक question के ये सारे terms use हो रहे हैं. Evaluate whether Sniff Limited should experiment with the hormone adding process using the data provided. Provide a separate assessment and conclusion for the male and the female version of the product. Right? So पहले हम इसके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो 5 मार्क का क्वेश्चन है ना उसको लिख देते हैं. मैंने ये वर्ड फॉर्मेट ही यूज किया है तो मैं बस इसके नीचे ही लिख देती हूँ. What is the question asking? I'll just show that to you just a minute. It is saying outline the financial and other factors that Sniff Limited should consider when making further processing decision. Further processing decision मतलब
जो हार्मोन इन्फ्यूज परफ्यूम्स बना रहे हैं उसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या है वो अपने को देखने हैं। और ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको उसके ही हिसाब से ट्रीट करेंगे, ज्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। When we take the financial factors, let me just put it down so you can see. Yes, financial factors. क्या लिखेंगे? एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि जो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो रेवेन्यू से होना चाहिए कम, राइट? सो योर इंक्रीमेंटल cost should be less than the incremental benefit or income. दूसरा जो हमको बाहर से नहीं दिखता है वो कौन से कॉस्ट है जो कंपनी इनकर करेगी, राइट? सो तो कौन से कॉस्ट है जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कंपनी इनकर करेगी, वो कौन से हैं? एक तो है आपका एडिशनल स्पेस जो आई बिलीव कंपनी के पास है, फिर ब्रांडिंग, फिर आगे आपका पेटेंट बिकॉज आप एक नया प्रोडक्ट निकाल रहे हो मार्केट में, फिर आगे आपका सुपरवाइजर का कॉस्ट जो अभी तो कर रहा है लेकिन बाद में ऑब्वियसली ही विल नीड टू यूज हिज ओन कॉस्ट। नाउ अभी जो सुपरवाइजर आपका जो एक्सपेरिमेंट को हैंडल कर रहा है दैट कॉस्ट कैन बी टेकन एज अ sunk cost. Why? Because you're already paying that supervisor to work for you. This is still an experiment. So it is okay if that supervisor is working 10% of his time for the experiment. Okay. Once this product is launched, it is famous, it will require its own labor, it will require its own supervisor also. राइट? ये तो हो गया फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या है? नॉन फाइनेंशियल तो मुझे एक ही लगा, which was when the company said that the hormone infusion is something which is not accepted universally because of health concerns. So that is what I'll put as a non-financial, right? I can say that hormones infused perfumes are not universally appreciated because of the health concern. एंड इससे क्या होता है? दिस कैन demotivate customers from sniffs existing products and reduce its sales. राइट? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेंसिटिवली आंसर दो, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल ना लिखो। 5 मार्क का है। फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, यू कैन फाइंड इट आउट वेरी फास्ट, राइट? Then comes the next question where you have terms like evaluate and assessment. Let's read it. Evaluate whether Sniff Limited should experiment the hormone adding process using the data provided. Provide a separate assessment and conclusion for the male and the female version, right? That means it is telling us to calculate what would be the costing, because obviously that is where we will be finding if the incremental cost is less than the benefit or not. So ये फाइंड करने से पहले हमको उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड जितने में हम बेच रहे हैं उसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। वहां जाने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज योर ब्रेन ड्रेन हियर. So according to me, your brain drain, oops, so sorry. Your brain drain is this. This is your brain drain for it. Because यहाँ पे थोड़े वैल्यूज ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, स्पेशली अल्कोहल के
और एरोमेटिक ऑयल के कॉम्पोजिशंस के लिए। और क्या आपका कंफर्टेबल है, और एक ब्रेन ड्रेन भी है वैसे क्वेश्चन में, वो है आपका ये वाला, एक ही बेटा, जस्ट सिलेक्ट दिस। ये जो करंट एनुअल सैलरी है ना, जिसका ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये भी एक ब्रेन ड्रेन है। क्योंकि आप क्या करोगे, या फिर कोई जनरली क्या करेगा, 35,000 की सैलरी में से 10% वो अपने मेल एंड फीमेल वर्जन पे डिवाइड कर देगा इक्वली, बिकॉज इट सेज इट स्प्लिट्स इवनली। बट एक्चुअली ये फिक्स्ड कॉस्ट आपने ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, ये कमिटेड कॉस्ट है, राइट, सुपरवाइजर को। अगर ये मेल फीमेल वर्जन ऑफ परफ्यूम नहीं आता तो क्या आप उसको 35,000 से कम पैसे देते? नहीं देते, राइट। दैट इज वाई दिस कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज अ sunk cost. And just because it is a sunk cost, don't expect this to be added to the cost of your male and female. So this is also a brain drain, and this is a brain drain. This will, if you don't understand this well, or if you add up these values, you will end up making the mistake. आपका इजी या कंफर्टेबल फैक्टर यहाँ पे क्या है? और एक ब्रेन ड्रेन है वैसे, रुको, ये वाला, ये जो मिलीमीटर का वैल्यू है ना, ये मिलीमीटर को अगर आप लीटर में कन्वर्ट ना करो तो आपका ये आंसर वापस रॉन्ग आ जाएगा। एग्जाम में होता है, कभी कभी हम प्रेशर में होते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, राइट। सो मिलीमीटर है, सारे वैल्यूज अलग है, सारे वैल्यूज लीटर में है, तो पहले तो इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। एंड द सेम लॉजिक सिट्स हियर ऑल्सो फॉर दिस थिंग ऑल्सो। यहाँ पे भी मिलीमीटर्स हैं, यहाँ पे भी मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन अगर आप देखो तो मिलीमीटर्स में, राइट। सो वो भी आपको कंसिडर करना है लीटर्स में। ये तीन थिंग्स है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स स्कोर करने से रोकती है। एक तो ये वाला सेक्शन जो हमने नहीं समझे है वो, एंड ऑब्वियसली दिस ऑल, राइट, मिलीमीटर्स एंड योर सम कॉस्ट, राइट। ब्रेन ड्रेन्स हो गए, कंफर्ट लेवल है यहाँ पे थोड़े बहुत है, लेकिन इसमें ब्रेन ड्रेनर्स ज्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप नोटिस करोगे कि ये मीडियम इंटेंसिटी वाला जो क्वेश्चन था, वो मीडियम इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ब्रेन ड्रेनर्स है, राइट। सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप खुद से क्वेश्चंस करोगे ना, सॉल्व करोगे या फिर देखोगे, तो आप अपने आप से आफ्टर 3-4 डेज आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अरे ये तो ब्रेन ड्रेनर है, राइट। और जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तभी जाके आप उसको, उससे जो डरते हो या फिर जो आपने पहले सुना है, जो मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स डरते हैं, बोलते हैं कि ये पेपर पास क्यों नहीं हो रहे हम लोग, राइट। या फिर जिन्होंने दे दिया है वो बोलेंगे अरे क्या डिफिकल्ट पेपर था। वो सारी चीजें क्यों होती, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर रहे वो लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और डर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और ब्रेन ड्रेनर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी भी बोल रही हूँ, है टाइम अपने पास, ऐसा नहीं है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। टाइम है, अच्छे से यूज करते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसके कैलकुलेशंस पे जाते हैं अपन। We will be looking at this calculations of evaluation. So first it says evaluate, so we're going to do the calculation part. Spreadsheets, राइट। तो पहले मैं इसका बेसिक कॉस्ट निकालूंगी। बेसिक कॉस्ट निकालने के लिए ऑब्वियसली 1000 लीटर्स बना रही हूँ मैं, राइट। तो 1000 लीटर कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड परफ्यूम निकालूंगी, तभी जाके उस पे मैं अपने मेल फीमेल का जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो एड अप कर पाऊंगी, राइट। सो जनरली कितना कॉस्ट लग रहा है, एक तो एरोमेटिक ऑयल्स थे, एक अल्कोहल था, राइट, और एक अपना हो गया लेबर। ये तीन चीजें हैं। चलो,
वैल्यूज फाइंड आउट करें। एरोमेटिक ऑयल्स जो जनरली राइट राइट, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज वेयर द ब्रेन ड्रेनर स्टार्ट्स। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 99% अल्कोहल, मतलब 1000 का 99% मतलब 990 लीटर्स of alcohol at $20 चाहिए, and 1000 minus 990 is 10, so 10 liters of aromatic oil चाहिए। उसके बाद हम आते हैं लेबर पे। लेबर हमको चाहिए 2000 आवर्स एट 15। ये ही पैराग्राफ में से हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे तो ही होएगा। राइट, सो लेट मी जस्ट स्टिक टू दिस पेज एंड गो हियर। राइट, एरोमेटिक ऑयल्स महंगे वाले थे, मतलब 18,000 वाले। राइट, सो 18,000 इंटू कितना चाहिए हमको, 10। 18,000 पर लीटर इंटू 10 लीटर्स। अल्कोहल जो वो सस्ता वाला था वो, सो हमको 990 लीटर्स इंटू $2, सॉरी $20। राइट, एंड लेबर क्या था, 2000 इंटू $15। चलो, ये हमारा टोटल हो गया। मैं इसको अच्छे से सम लगा के 229800। राइट, सो ये हो गया मेरा कॉस्ट। अब मेरा प्राइस क्या है, कितने में सेल कर रही हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो वो भी एक ब्रेन ड्रेनर था। अगर आप उठा के 39.98 लिख दोगे तो गलत है आंसर। राइट, सो यू हैव टू डू इट एज 399.8 into 1000। राइट, first we can do that, or we can do what is we can find out the cost per liter, क्योंकि ये तो अपना 1000 लीटर्स का है। राइट, सो मैं क्या करूंगी, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000। राइट, एंड अब मेरा प्राइस पर लीटर कैसे आएगा, वो इज इक्वल टू 39.98 इंटू 10 करूं, क्योंकि 100 ml की एक बॉटल है तो 1000 ml इज 1 लीटर। I got my cost, I got my price। अब क्या करेंगे, अब हमको और एक इंफॉर्मेशन है कि लेबर जो भी है उतना ही है। दैट मीन्स लेबर का हमको लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। राइट, लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हम मटेरियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट, लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर of labor used will be equal to income generated minus material cost divided by labor। राइट, सो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 399,800 माइनस मेरी लेबर आ गई, सॉरी मेरा मटेरियल वैल्यू आ गया, एंड देन डिवाइडेड बाय 2000। दैट मेक्स इट 100%। राइट, अब ये वैल्यू लेके आई विल गो फर्दर एंड आई विल फाइंड आउट द वैल्यू सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल। नाउ आप पूछोगे कि यहाँ तक आपने प्रोसेस सेम क्यों किया एंड बाद में जाके आप अलग क्यों कर रहे हो। बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टेज या स्टेप तक वो परफ्यूम बनाने का जो भी टेक्निक या प्रोसेस है ना, वो सेम जा रहा है। उसके बाद ही आप नोटिस करोगे that there is a further processing। so further processing का जो कॉस्ट है, सी जो 1000 लीटर्स को फर्दर प्रोसेस करने का कॉस्ट है वो मैं मेल एंड फीमेल पे डालूंगी, लेकिन ये जो पहला पैराग्राफ जो ब्रेन ड्रेन का था वो मैं जेनेरिक ही रखूंगी। राइट, बिकॉज दैट इज जनरल फॉर एनी परफ्यूम दैट द कंपनी मेक्स। अब निकालते हैं हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट।
right? So incremental cost के लिए you will have all your products here. I'm going to put my male and female version. Aromatic oil, alcohol and labor, right? इसके अलावा कुछ भी कॉस्ट यहाँ पे नहीं आएगा. एरोमेटिक ऑयल और अल्कोहल एक्चुअली मैंने पहले कवर कर लिया था, तो यहाँ पे कुछ और लिखा था. हाँ, राइट, ये जो हॉर्मोन्स है तो मैं सीधा हॉर्मोन्स ही लिखती हूँ यहाँ पे, राइट. सो अभी इसका हॉर्मोन्स क्या है. 200 लीटर्स पे 2 लीटर हॉर्मोन्स जाते हैं जो 7750 के हैं, और 800 लीटर्स में 8 लीटर हॉर्मोन्स जो 12,000 के हैं. सो आई एम जस्ट गोना पुट दैट वैल्यू बिकॉज इट इज अ सेपरेट वैल्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट आई हैव जस्ट क्रिएटेड. So it is going to be is equal to 7750 into 2 liters, and this is going to be equal to 12,000 into 8 liters, right? अब मेरा लेबर कॉस्ट आया. लेबर कितना था. 700 for female and 500 for male. So let me just put those values here. Male labor is 500 into 100, and female is going to be, oh sorry, I have to put is equal to sign ना डालो तो आंसर आएगा नहीं. एंड यहाँ पे 700 into 1. बिल्कुल मत पूछना सुपरवाइजर कॉस्ट कहाँ आएगा. संक कॉस्ट है, कहीं भी नहीं आएगा, और कोई भी कॉस्ट कहीं नहीं आएंगे. कंफ्यूज मत होना. फिक्स कॉस्ट ले लो, रिसर्च ले लो, सुपरवाइजर कॉस्ट ले लो, कुछ भी कॉस्ट, ये सारे ही संक कॉस्ट है. ये सारे कॉस्ट हमको दिखाए भी नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर स्पेसिफिकली दिखाया था स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम इसको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे. अब इसको टोटल करते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मिल जाएगा, राइट. एक्सेल, राइट, कॉस्ट मिल गया. अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं. सामने सामने, या इंक्रीमेंटल बेनिफिट, राइट. सो पहले कितने पैसे मिलते थे. स्टैंडर्ड जब आप बनाते थे तो स्टैंडर्ड में तो मेल फीमेल होता नहीं था, लेकिन अगर उसको सेग्रीगेट करें तो भी 200 liters was sold to male and maybe 800 was sold to female. So if we take that logic and go ahead, it would be 200 into that 399.8, this one. Wait, let me just see why it has come up here. It is going to be is equal to 399.8 into 200, right? So that makes it to 79960, and ये वाला है 399.8 into 800, right? So that becomes 319840. अब उसके बाद जब हॉर्मोन्स ऐड होते हैं तो आप कितना प्रोडक्शन या कितना सेल कर रहे हो, राइट. सो अगर हॉर्मोन्स का हम देखें, राइट, सो हॉर्मोन्स के लिए देयर इज टू वे ऑफ डूइंग दिस. अगर हम स्टैंडर्ड अलग एंड हॉर्मोन्स अलग करें तो हॉर्मोन्स आर सेलिंग 1/10 of it, right? So the two ways of doing this is either you can take individuals and multiply that, which is 200 liters into your 750 and 800 into 59.5. Or what you can do is you can take that 1/10 ka logic which is mentioned here. Just let me just show you. Huh. 1/10 ka logic, and you can add up those hormones and see how much is the incremental cost. Just because the term incremental is used here, I am going to stick to the normal hormonal values, which is 200 into कितने में सेल हो रहा है. See, this is 75 per 100 ml, right? So 75 into मैं 10 करूं, which is 750.
राइट, एंड ये वाला होगा 800 इंटू 59.50 इंटू 10 मतलब 595, राइट. Now we will just see how much is the difference, which is equal to the new minus the old. Okay, and take the same formula and put it in the next version, right? Now, this is your incremental revenue. This is your incremental cost, right? So देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. पहले सिचुएशन में जहां पे मेल का बना रहे हैं, दिस इज द कॉस्ट एंड आई एम गोइंग टू डिडक्ट द रेवेन्यू आउट ऑफ इट, सो इट बिकम्स 4540. दैट मीन्स फॉर दिस प्रोडक्ट मेल वर्जन company is making a profit, and for the next one you can clearly see that there is a loss. This value minus this value, company is making a loss. नाउ हाउ मच इज द लॉस. अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट जो मेल परफ्यूम बनाएंगे उसका डबल लॉस तो फीमेल वर्जन ऑफ परफ्यूम्स ही ले लेता है, राइट. सो दैट इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट. द क्वेश्चन डज नॉट ओनली आस्क यू टू calculate it but also asks you to evaluate and assess it, right. So we have to write, should the company go forward with the experiment of adding or not, right? So let's put that forward here. We will just write what we have seen here. So we would say male perfumes are making profit, but female perfumes are making losses. The loss or the profit, the loss of actually, the loss of female is twice the profit of male perfume, right? And lastly, we can say company should not go forward with the further processing. 15 marks in your pocket, right? ये एक प्रोसेसिंग का क्वेश्चन था. अगर हम हमारा सिलेबस देखें तो प्रोसेसिंग को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है प्रोसेसिंग में. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ पिकिंग अप अ क्वेश्चन विच इज टचिंग दिस काइंड ऑफ ट्रिवियल मैटर, राइट. सो विद दिस कम्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास. मैं क्विक रिकैप कर लेती हूँ आपके साथ क्या किया है हम लोग ने, right. So we have basically understood the mix variances, where I get a lot of students asking me कि मैम यहाँ पे थोड़ा सा हमको confusion आ रहा है, ये mix variances कैसे करने हैं. So मैंने वो आपको clarify किया theoretically, okay, और with a logic of कहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर right है या wrong है, ठीक है. The second thing is when we shifted to the first question, right? The first question was based on finding out the cost. It was a medium intensity question. It was not an easy question. मैं बता रही थी तो आपको easy लग रहा था, लेकिन ये easiness कब आती है जब आप ज्यादा questions देखते हो, राइट, एंड आइडेंटिफाई करते हो कि ओके ये चीज है, यहाँ पे वर्कआउट करनी चाहिए, यहाँ पे उस पर ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देना चाहिए, राइट. देन द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई पिक्ड अप वाज ऑन फर्दर प्रोसेसिंग. वो थोड़ी इंटेंसिटी हाई है. मैंने दोनों ही क्वेश्चंस में आपको ब्रेन ड्रेनर्स दिखाए. दोनों में ही आपको मैंने वेल सेकेंड वाले में तो इट वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट वाज अ ब्रेन ड्रेनर. सो फर्स्ट वन में देयर वाज अ लिटिल कंफर्ट लेवल, जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और लगता है कि चलो ये तो आ रहा है एग्जाम में, राइट. सो दैट्स हाउ आई हैव टेकन टुडेज टू क्वेश्चंस. टुमारो I am going to do two more questions, out of which one is going to be on the mix variances. Okay.
सो आई होप कि आप मेरे साथ साथ ACCA स्टडी हब के क्वेश्चंस जैसे मैंने बताए थे कर रहे हो एंड गोइंग फॉरवर्ड विथ इट। ऑल द बेस्ट, प्लीज कीप स्टडिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो आपके तरफ से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो, हैव अ लवली डे, हैप्पी स्टडिंग, एंड आई